alignment of worldly objects. The emotions and thoughts of insecurity, fear, depression, irritation, and so on. And by keeping our mind always in the worldly desires and craving and for future, we fail to enjoy the present filled with the joy by the divine supreme. Surrender to God through exclusive devotion and accepting the present moment without lamenting, we will see miracles happening in our life by God's grace. Let us begin this day with the divine chanting of Venkateshwara Suprabhadam by Aparna Madam and Shubha Madam team. Over to Aparna Madam to begin the day with the divine chanting of Venkateshwara Suprabhadam. Om Namo Venkateshaya. Kausalya Supraja Rama Purva Sandhya Pravartate Uttishta Narshardula Kartavyam Daivamanhikam Uttishtottishta Govinda Uttishta Garudadvaja Uttishta Kamala Kanta Trailokyam Mangalam Kuru Uttishtottishta Govinda Uttishta Garudadvaja Uttishta Kamala Kanta Trailokyam Mangalam Kuru Matah Samasta Jagatam Madhukaita Bhare Vaksho Viharini Manohara Divya Murte Shri Swami Nishrita Janapriyadana Shile Shri Venkatesha Dayate Tava Suprabhatam Matah Samasta Jagatam Madhukaita Bhare Vaksho Viharini Manohara Divya Murte Shri Swami Nishrita Janapriyadana Shile Shri Venkatesha Dayate Tava Suprabhatam Tava Suprabhatam Aravinda Lochane Bhavatu Prasanna Mukha Chandra Mandale Vidhi Shankarendra Vanita Vrusha Saila Natha Dayate Dayanidhe Artyadi Saptarushayas Samupasya Sandhyam Akasha Sindhu Kamalani Manoharani Adaya Padayugamarchayitum Prapannaha Seshadrishekhara Vibho Tava Suprabhatam Panchananabja Bhava Shanmukhavasavadya Traivikramadicharitam Vibhudastuvanti Bhasha Patih Patati Vashara Shuddhi Marat Sheshadrishekara Vibho Tava Suprabhatam Ishat Prafulla Sarasiruhanari Kela Pugadrumadi Sumanohara Palikanam Avati Mandamanilah Saha Divya Gandhaihi Seshadrishekhara Vibho Tava Suprabhatam Unmilyanetayugamattampanjarasthaha Patravasishtakadaliphalapayasani Bhuktva salilamathakele pathanti Seshadrishekhara Vibho Tava Suprabhatam Tantri Prakarsha Madhurasvanaya Vipanchya Gayatyananta Charitam Tava Naradopi Bhasha Samagrama Satkritkara Charu Ramyam Seshadrishekhara Vibho Tava Suprabhatam Bhrungavali Chamakaranda Rasanuviddha Jhunkara Gita Ninadai Sahasevanaya Niryatyupanta Sarasi Kamalodarebhyaha Seshadrishekhara Vibho Tava Suprabhatam Yosha Ganena Varadadni Vimadhyamani Ghoshalayeshu Dadhimantana Tivra Ghosha Roshat Kalim Vidadate Kukubhascha Kumbha
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. పద్మేశమిత్రశతపత్రగతాళివర్గాః హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యాః భేరీనినాద బిభ్రతి తీవ్రనాదం. శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతం. శ్రీమన్నభీష్టవరధాకిల లోకబంధో శ్రీ శ్రీనివాస జగదేకదయైక సింధో శ్రీదేవతాగృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిల లోకబంధో శ్రీ శ్రీనివాస జగదేకదయైక సింధో శ్రీదేవతాగృహ భుజాంతర దివ్యమూర్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. శ్రీ స్వామి పుష్కరిణికాప్లవ నిర్మలాంగాః శ్రేయోర్థినో హర విరించి సనందనాద్యాః ద్వారే వసంతి వరనేత్ర హతోత్తమాంగాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. శ్రీశేషశైలగరుడాచల వెంకటాద్రి నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రి ముఖ్యాం ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతేరనిశం వదంతి శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. సేవా పరాశివ సురేశ కృశానుధర్మ రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథ బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశ శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజ స్వస్వాధికార మహిమాధికమర్థయంతే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. సూర్యేందు భౌమ భుతవాక్పతి కావ్యశౌరి స్వర్భానుకేతు దివిషత్ పరిషత్ ప్రధానాః త్వద్దాసదాసచరమావధిదాసదాసాః శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. తత్పాదధూళిభరితస్ఫురితోత్తమాంగాః స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్ష నిజాంతరంగాః కల్పాగమాకలనయాకులతాం లభంతే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. త్వద్గోపురాగ్రశిఖరాణి నిరీక్షమాణాః స్వర్గాపవర్గ పదవీం పరమాశ్రయంతః మర్త్యా మనుష్య భువనే మతిమాశ్రయంతే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. శ్రీభూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్దే దేవాదిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే శ్రీమన్ననంత గరుడాధి విరచితాంఘ్రే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ వైకుంఠమాధవ జనార్దన చక్రపాణి శ్రీవత్స చిహ్న చిరణాగత పారిజాత శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే కాంతాకుచాంబురుహ కుట్మలలోల దృష్టే కళ్యాణ నిర్మల గుణాకర దివ్య కీర్తే శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. మీనాకృతే కమఠకోల నృసింహవర్ణిన్ స్వామిన్ పరశ్వత తపోధన రామచంద్ర శేషాంశ రామయదునందన కల్కి రూప శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం. ఏలా లవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
दिव्यं वियत्सरितु हेमघटेषु पूर्णम् धृत्वाद्यवैदिकशिखामणयः प्रहुष्टाः तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि सम्पूरयन्ति निनदैः विहङ्गाः श्रीवैष्णवाः सततमर्धितमङ्गलास्ते धामाश्रयन्ति तव वेङ्कटसुप्रभातम् ब्रह्मादयः सुरवरासमहर्षयस्ते सन्तः सनन्दनमुखास्वथ योगिवर्याः धामान्तिके तव हि मङ्गलवस्तु हस्ताः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागर समुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निज वैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् लक्ष्मीनिवास निरवद्य गुणैकसिन्धो संसारसागर समुत्तरणैकसेतो वेदान्तवेद्य निज वैभव भक्तभोग्य श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातम् ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभातसमये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थसुलभां परमां प्रसूते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखा किल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनवेल कृतैरपराधशतैः भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे अधिवेङ्कटशैलमुदारमतिर्जनताभिमतादिकदानरतात् परदेवतया गदिता निगमै कमलादयतान्न परं कलये कलवेणुरवावशगोपवधुष्यतकोटिवृतस्मरकोटिसमात् प्रतिपल्लविकाभिमतात् सुखदात्मसुदेव सुतान्न परं कलये अभिराम गुणाकर दाशरदे जगदैक धनुर्धर धीरमते रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भवदेव दया जलदे अवनीतनया कमनीय करं रजनीकर चारु मुकाम्बुरुहम् रजनीचर राजतमो मिहिरं महनीयमहं रघुराममये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वयमान्यमहं न कदञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननादो ननाद सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननादो ननाद सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरदस्ते पदाम्बोजयुग्मे प्रणामे च यागत्य सेवां करोमि
सकृत्सेवया नित्यसेवा फलत्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश। अज्ञानिना मया दोषनशेषान् विहितान् हरे, क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे। अज्ञानिना मया दोषनशेषान् विहितान् हरे, क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंहर्दिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीम् तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंहर्दिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीमत्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनत वत्सल सर्वशेषिम् स्वामीं परुष्वत् स्वामीं श्रीमन्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञ शक्तनत वत्सल सर्वशेषिम् स्वामीं सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। आनूपुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। सद्यो विकासित मुदित्व रसान्द्र राग सौरभ्य सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। रेखामयध्वज सुधाकलशातपत्र वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। ताम्रोधरद्युतिपराजित पद्मरागौ बाह्यैर्महोबिद विभूत महेन्द्र नीलौ उद्यन्नकांशुबिरुदस्त शशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। सप्रेम भीति कमलाकर पल्लवाभ्यां संहावनेऽपि सपदि क्लममाददानौ कान्ताववाङ्मनसगोचर सौकुमार्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीमही तदनुरूप निजानुभाव नीलादिदिव्यमहिषीकर पल्लवानाम् आरुण्य संक्रमण सत्किल सान्द्र रागौ श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। निध्यानमद्रिनि शिवादि किरीटकोटि प्रत्युक्त दीप्त नवरत्न महप्ररोहैः नीराजनाविधिमुदारमुपाददानौ श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। विष्णौ पदे परमहित्युजित प्रशंसौ यौ मद्द उत्स इति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितल प्रतिष्ठौ श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स चरणौ शरणौ रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। मन्मूर्ध्निखालय फणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरशिस्तुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्य मनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणं शरणं प्रपद्ये। अम्लानहृष्यदवनीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिल मनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रायः प्रपन्न जनता प्रथमावदाह्यौ मातुस्थनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। सत्त्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयाद्रगृगञ्चलेन सौम्योपयन्तु मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।
सत्त्वोत्तरै सततसेव्य पदाम्बुजेन संसारतारकदयाद्रघृदञ्चलेन पयन्तु मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवद्य गुणान् किं करो वृषगिरीश न जातु मह्यम्। ಮ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸಾರಿ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಶ್ರೀಯಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ತಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮೋ ಲೋಕ ಸುಭ್ರು ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ. श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाग्रहे मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदां सर्वशेषसां सदा सम्भोगनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. नित्याय निरवत्याय सत्यानन्दसितात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. सर्वदः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिने सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुज्ये परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. ராஜலட்சுமி இல்லைன்னு நீங்க சொல்லல. ஆகால தத்துவமிஷ்டாந்தமாத்மனுபஷ்யதாம் அதுத்வரூபாய वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. परस्प्रायत्वशरणौ पुंसां शरण्यवाणिकां कृपया दृशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. दयामृतरङ्गिण्या तरङ्गैरिवसीदलै अभाङ्गै सिञ्जते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. सरग्भूषाम्बरहेदीनां सषुमावहमूर्तये सर्वार्तिशमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्. श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. श्रीमत्सुन्दरजामातृमुनिमानसवासिने सर्वलोकनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्वपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्. Thank you for the wonderful chanting of Venkateshwara Suprabhadam, invoking the blessings of Sriman Narayana, the Lord of Seven Hills. Once we close the eyes and listen to this chanting, it takes us to Tirumala, feeling the divine, making us to feel the divine breeze. In Varaha Avatar, the Lord said to Bhumi Pirati that anyone who worships me with the flowers, one who does the Nama Sankirtanam, and one who does Atma Chintan and surrenders at my lotus feet, I take care of him at all times. The three divine orders are well explained in a simple language by Andal Nachiyar too. Now, invoking the blessings of Andal Rangamannar, let us begin the chanting of Tripalli Edichi by Thondaradi Podiyalvar, none other than it's a Suprabhadam for Lord Ranganatha of Srirangam, followed by the chanting of Tripavai, Blessed to the Humanity by Andal Nachiyar. तमेव मध्वा परवासु देवम् अङ्गे सयं राजवदर्हणीयं प्राबोधकीं सोकृतभुक्तिमालां भक्ताङ्गिरेणुं भगवन्तमीडे मण्डங்குயன்பர் மாமரையோர் மன்னியசீர் தொண்டரடிப்புடி தொன்னகரம் வண்டு திணத்தவயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளி உணர்த்தும் பிரானுதித்த ஊர் உணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் தனீருலகன்றது காலையும் பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம்
வானவர் அரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிரந்தர இவருடன் புகுந்த இருங்களிற் தீட்டமும் பிடியோடும் முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுள்ளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையுள் அகன்றது காலையும் பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவருடன் புகுந்த இருங்களிற் தீட்டமும் பிடியோடும் முரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்றுள்ளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கொழுங்குடி முல்லையன் கொழுமலரனவே கூர்ந்தது குணதிசை மாதரும் மெதுவோ எழுந்தன மலரனை பள்ளி கொள்ளன்னம் ஏன்பனி நலந்தனம் குதறி வேங்கிய முதலையன் பிளம்புழை பயிர்வார் வெள்ளை விடங்கனை சுடங்கி அழுங்கிய ஆணையின் அருந்துயர் கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. சுடரொளி பரந்தன சூழ்திசையெல்லாம் துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி பசுந்தினன் பனிமதிவனோ பாயுருளகன்றது பைம்பொழிற் கழுகின் மடலிட கீரிவன் வாழைகள் நார வைகரை கூர்ந்தது மாறுதமிதவோ அடலொடி திகழ்ந்தது தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. மேட்டில மேதிகள் தலைவிடும் மாயர்கள் வேங்குழல் ஓசையும் விடைபணி குரலும் ஈட்டிய விசைத்திட பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பினன் இலங்கையர் குலத்த வாட்டிய வரிசிலை வானவரவரே மாமுனி வேள்வியை காத்தவர் பிரதம் ஆட்டிய அடுத்த அயோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. புலம்பின புட்களும் பூங்குழல்களின் வாய் போயிற்று கங்குள் புகுந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கனைகடல் அரவம் களிகண்டு முயற்றிய களம்பகம் புனைந்த அலங்கலம் தொடையல் கொண்டடி இணை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனர் ஆதலிலம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு செய்கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. இரவியர் மணிநெடும் தேரோடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலினன் அருமுகன் இவனோ மருதரும் பசுக்களும் வந்தீண்டி புறவியுடு ஆடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருவரை அணையின் கோயில் முன் இவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அந்தரத் அமரர்கள் கூட்டங்கள் இவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதரும் இவரோ இந்திரன் ஆணையும் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமான் உன் கோயிலின் வாசல் சுந்தரர் நெருக்கவி சாதரர் நோக்க இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் அந்தரம் பாரிடம் இல்லை மற்றிதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. வம்பழுள் வானவர் வாயுரை வழங்க மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் படிமக்களம் காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டு நன்முனிவர் தும்புரு நாரதர் புகுந்தனர் இவரோ தோன்றின நிறவியும் துருமொழி பரப்பி அம்பரதலத்தின் ரகல்கின்ற இருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதுமில் தன்னுமை எக்கமத்தளி யாழ்குழல் முழமோடு இசை திசை கிழமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கருடர்கள் கெந்தருவர் அவர் கங்குலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணியர் ஏக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவர்க்கு நாளோலக்கம் அருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தன்னுமை எக்கமத்தளி யாழ்குழல் முழமோடு திசை கிழமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணறர் கருடர்கள் கெந்தருவர் அவர் கங்குலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணியர் இயக்கர் சித்தர் உம்மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் ஆதலில் அவர்க்கு நாளொழக்கம் அருள அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்துள்ளாயே. கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கணைக்கடல் முளைத்தனர் இவனோ துடி இடையார் சுரிகுடல் பிழிந்துதறி துகிலெடுத்து ஏறினர் சூழ்புணல் அரங்கா தொடையத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொன்றடிப்பொடி என்னும் அடியனை அழியனென்றொளி உன்னடியார் காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. கடிமலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனைக்கடல் முளைத்தனன் இவனோ துடி இடையார் சுரிகுடல் பிழிந்துதறி துகிலெடுத்து ஏறினர் சூழ்புணல் அரங்கா தொடையத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டரடிப்பொடியனும் அடியனை அழியனென்றொளி உன்னடியார் காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே. நீலாத்துங்க சனகிரி தடி சுப்தமுத்யோத்ய கிருஷ்ணம் பாராத்யம் ஸ்வம் ஸ்ருதி சத சிர சித்த மத்யாபயந்தி
सोऽशिष्ठायां सजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते कोथा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீல்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமியர்காள் கூர்வேள் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியன் போல் முகத்தான் நாராயண் பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போதுவீர் போதுமீனோ நேரிழையீர் சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்காள் கூர்வேல் கொடு தொழில் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதே இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேலோர் எம்பாவாய். வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம் பாவைக்கு செய்யும் கிரிசேர்கள் கேளீரோ பார்க்கடலில் பைத்துன்ற பரமன் அடிபாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டெழுதோ மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதென செய்யும் தீக்குறளை சென்றோர்தோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உயுமார் எண்ணி உகந்தேலோர் எம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெருவசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய். ஆலிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆலியுள் புக்கு முகந்து கொடார் தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாலியன் தோளுடைய பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சாங்கமுதைத்த சரமலை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். மாயனை மன்னுவட மதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனே ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினார் பாடி மனத்தினார் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவான் நின்றனவும் தீயினால் தூசாகும் செப்பேலோர் எம்பாவாய். புல்லும் சிலம்பினகான் புல்லரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச் சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து ஹரியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். கீசு கீசென்று ஆணை சாத்தான் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டில்லையோ பேய் பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை கேட்டு வாசமுடன் ஆளுயர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்தும் தைரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடந்திடியோ தேசமுடையாய் திரவேலோர் என்பாவாய். கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்தும் நெய் கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோது களமுடைய பாவாய். எழுந்திராய் பாடி பறைகொன்று மாவாய் பிளந்தானை மல்லாரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவா வென்றாராய் தருளேலோர் என்பாவாய். தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய தூமம் கமல துள்ளனை மேல் கண்மலரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ
உன்மகள்தான் ஊமையோ அன்றிச் செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்துயிர் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்றும் நாமும் பலவும் நவின்றேலோரென்பாவாய் நோற்று சொர்க்கம் புகின்ற அம்மனாய் மாற்றமும் தாராரோ வாசல் திறவாதார் நாற்றத் துழாய்முடி நாராயணன் நம்மால் போற்ற பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய்விழந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ ஆற்ற அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தீற்றமாய் வந்து திரவேலோர் என்பாவாய். ரேவதி மேடம். கச்சு கரவை கணங்கள் பல கண்டு தெற்றார் திரளழிய சென்று செருச்சியும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புற்றவல் புனமயிலே போதராய் சுற்றத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முற்றம் புகுந்து முகில்வண்ணன் பேர்பாட சிற்றாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டினி எற்று குரங்கும் பொருளேலோர் எம்பாவாய் கணைத்திலங்கற்றெருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முளை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் செல்வன் தங்காய் பனைத்தலை வீழனின் வாசல் கடை பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனத்து கிணியானை பாடவும் நீ வாய்த்திரவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலோர் எம்பாவாய் புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கரை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ முறங்கேற்று புள்ளும் சிலம்பினகான் போதறி கண்ணினாய் குள்ள குளிர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோர் எம்பாவாய் உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழ் நீர் வாய் நெகிழ்ந்த ஆம்பல் வாய் கூம்பினக்கான் செங்கல் பொடி கூறி வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்ப்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நானாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் மேந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோர் எம்பாவாய். எல்லே இளம் கிளியே இன்னம் உறங்குதியோ சில்லென்றழையேன் மீன் நங்கை மேற்போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வள்ளீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லோரும் போந்தரோ போந்தர் போந்தென்னிக்குள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றளிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய். நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடி தோன்றும் தோரணா வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய். ஆயர் சிறுமியோரு முக்கு அன்ற பறை மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயமாய் வந்தோம் துயில் போய் எழப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய். நாயகனாய் நின்ற நந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடி தூண்டும் தோரணா வாயில் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய். ஆய சிறுமியொரு முக்கு அன்ற பறை மாயன் மணிவண்ணன் தென்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயில் எழப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய். அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும் எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதாய் அறிவுராய் அம்பரம் ஊடறுத்தோங்கி உலகளந்த உம்பர் கோமனே உறங்காந்தெழுந்திராய் செம்பொற்கழலால் அடிச்செல்வா பலதேவா உம்மியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய். உந்தும் மதக்களிற்றன் ஓடாத தோல்வலியன்
நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர்பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வலை ஒளிப்ப வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் உந்து மத களிற்றன் ஓடாத தோல்வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடை திறவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர்பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்ச சயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர்மார்பா வாய்திறவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீ உன் மணாளனை எத்தனை போதும் துழிடைய ஒட்டாய்கான் எத்தனை மேலும் பிரிவாற்றுக்கு இல்லையால் தத்துவம் அன்றி தகவேலோர் எம்பாவாய் முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயில் எழாய் செப்பம் உடையாய் திரள் உடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயில் எழாய் செப்பன்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நெப்பின்னை நங்காய் திருவே துயில் எழாய் உக்கமும் தட்டுணையும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய் ஏற்ற கரங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றம் உடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயில் எழாய் மாற்றார் உனக்கு வழி தொலைந்து உன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய். அங்கண்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணிவாய்ச் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிறுசிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய். மாரி மலைமுழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர்பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமோ போலேவி பூவைப்பூ வண்ணா உன் கோயில் நின்றும் இங்கேனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். மாரி மலைமுழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர்பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டு போதருமா போலேனி பூவைப்பூ வண்ணா உன் கோயில் நின்றும் இங்கேனோ போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய். அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி சென்று அங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குடிலா எரிந்தாய் கழல் போற்றி குன்று குடையா எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகைக்கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்று என்று உன் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய். அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாயடி போற்றி சென்று அங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலா எரிந்தாய் கழல் போற்றி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகைக்கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்று என்று உன் சேவகமே ஏத்திப் பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய். ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓர் இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தருக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைத்த
கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தெலோரெம்பாவாய். மாலை சாண்டிங்கா பண்ணிடுங்கோ. ஆ பாசுரம் சாண்டிங்கா பண்ணிடுங்கோன்னு. மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலண்ண வண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடு உடையனவே சால பெரும்பரையே பல்லாண்டிசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலின் இலையாய் அருளேலோ ரெம்பாவாய். ஊடாரை கொல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரும் சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவி பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கரலும் யான் அணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பாற்சோறு மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவி பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பார்ச்சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். உந்தன்னோடு உறவே நமக்கு இன்று ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினார் உந்தன்னை திரியே அனைத்தோடு திரி அருளாது தேவா தூத்தாராய் தலைவர்கள் கடவுளை செய்து காணல்கள் என்றும் அறிவொழித்து இல்லாத ஆட்களுக்கு உந்தன்னை பேணி பெண்களை புரிந்து நாமதையும் கொலையொன்று இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு உறவே நமக்கு இன்று ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினார் உந்தன்னை திரியே அனைத்தரும் திரி அருளாது தேவா தூத்தாராய் தலைவர்கள் என்றார். சித்தன் பிறாலே வந்து தெரிவித்து கொட்டாரை அங்கே போட்டு கொடுக்கிறார் கொடுத்து பிறந்து நீ குற்றேவை எவரை கொள்ளாமல் போவார் வித்தை கைகொள்வான் அன்றால் கோவிந்தார் எத்தைக்கும் வேறு வேறு ஒன்றோடு குற்றமே ஆகும் முக்கிய மற்ற காவலர்கள் மாற்றியோ என்பார். சித்தன் பிறாலே வந்து தெரிவித்து ஒரு கொட்டாரை அங்கே போட்டு கொடுக்கிறார் எத்தனை சொல்லும் கலந்து திறந்து நீ குற்றேவை எவரை கொள்ளாமல் போவார் உற்றமே ஆகும் முக்கியமா காட்சி அசையும் காரணங்கள் மாற்றியோ என்பார். அந்த தலைவர்கள் மாணவர்கள் கேட்டது இந்த திருமணத்தில் தெரிவித்த தெரிவித்து அங்க கைகொண்ட ஆசை அணுகி கைநாளை தன்னுடைய கட்டெல்லாம் கோரி சென்றார். அந்த தமிழ்நாளை முப்பது தப்பாகி நீதி படித்திருப்பார் வீரனு மாங்கலினம் செய்து திருக்களுக்கு செல்ல திருமானார் செய்து திருவள்ளிக்கு இருந்தவாறு என்பார்கள். அந்த கண்டறிந்த மாணவரை கேட்டது இந்த திருமணத்தில் செய்த செய்தி அங்க கைகொண்ட ஆற்றை அங்கிருந்து கைகளை கண்டுகளை கட்டெல்லாம் கோரி சென்றார். அந்த தமிழ்நாடு முப்பதை தப்பாகி நீதி படித்திருப்பார் வீரனு மாணவர்கள் செய்த திருமணத்தில் செல்ல திருமானார் மேலும் திருமணத்தில் இருந்தவாறு சுபா மேடம். திருகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம்மை துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றை விலங்களை கொல்லாமல் போகாது இற்றை பறை கொள்வான் அன்றுகான் கோவிந்தா எற்றைக்கும் ஏழேல் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு உற்றோமேயாவோம் உனக்கே நாம் செய்வோம் மற்ற இனங்காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுமோர் சோதிமணி மாடம் தோன்றுமோர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழுமோர் நான்மறைகள் ஓதுமோர் வில்லி பக்தோர் வேதக்கோனோர்
பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமநடி காட்டும் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐயைந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு திருவாடி புறத்து ஜெகத்துத்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே பெரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானால் வாழியே 143 உரைத்தாள் வாழியே உயரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருவள்ளி வடநாடு வாழியே வன்புதுவை மலர் நகர்கோதை மலர்பதங்கள் வாழியே திருவடிகளே சரணம். That was the divine chanting of Tirupalli Ezhi and Tirupavai. Thanks to the devotees who chanted Tirupavai so nicely, and we register our thanks and gratitude to Guruji Ramabhadranji, who groomed so many students of Vishwas to chant Tirupavai so nicely and with perfection. Namasmarana or Nama Sankirtana saved Prahalada from the agony of torture. Elephants brought to crush him turned back when they saw this little boy. Fire could not burn him. The rocks on which he was thrown from the great heights could not bruise him. No poison could affect him. That is the power of Namasmarana or Govinda Nama Sankirtana. Vishwas is committed to take Vishnu Sahasranamam to the nook and corner of the world with its 5D principle: devotion, discipline, dedication, determination, and development. And with the genuine efforts, Vishwas is blessed. We are blessed by the grace of Sriman Narayana. Today, Vishwas Maargazhi Mahotsav, which started its celebration on 16th December 2021, inaugurated by Sri Murali Ji of Sri Krishna Sweets. Today, we are on the 29th day of this celebration. Being an auspicious day of Ekadasi, at Vishwas, we have Aganta Parayan of Vishnu Sahasranama chanting after the daily news bulletin at 6 a.m. Our next program is chanting of Vishnu Sahasranamam on the global platform by Vishwas Satsang. After that, we have the Today Pasuram to be sung by a devotee and followed by the explanation of today's Pasuram by our Guruji Ramabhadranji. After that, at 6 a.m., we have the daily news bulletin of Vishwas. After the news bulletin, there is an inaugural function of the Aganta Nama Parayanam of Vishnu Sahasranamam chanting on the same global platform. All the devotees are requested to stay tuned to this inauguration. And this Aganta Parayanam of Vishnu Sahasranama chanting, which commences around 6:16 a.m. today, will go up to 6 a.m. tomorrow morning, that is 14th January 2022, starting the beginning of the next month. All the devotees are requested to stay tuned. And many Vishwas Satsangs across the globe are participating in this Vishnu Sahasranama chanting, which will be there for almost 24 hours, starting from today morning up to the next day morning. And tomorrow, after the Vishnu Sahasranama chanting completes, the Aganta Parayanam gets completed around 6 a.m. tomorrow, Guruji Ramabhadranji will explain the 30th Pasuram of Tirupavai. Though today is the last day of Dhanur Masam with the 29th Pasuram, the 30th Pasuram explanation will be given by our Guruji as the concluding celebration of the Maargazhi Mahotsav tomorrow. Sridhar sir, do you like to say something? Yeah, only one clarification I would like to make it, because we wanted to make this Dhanur Masa today as the last date, but tomorrow, I think we have that morning as usual from 4 to 5. Earlier it was not there. Tomorrow, yes, sir. The WC's link,
We close our chanting up to 4 a.m. 4 a.m. Similarly, one day tomorrow being a Pongal happy day, happy Pongal, happy Makara Sankranti, we have that usual 4 to 4:30 Suprabhadam, followed by Tirupalli, everything, and then the usual chanting by Singapore team tomorrow. There was some doubt about many people. In fact, I had some doubt. We want to close this function today. So we are not closing it today. We are having Tirupavi tomorrow also. Is it okay? You can line it up, no? But our chanting is there till 6 o'clock, sir, tomorrow. No, in the WCC link, I think we should, I have already told them to close that at 4 o'clock because we have got regular chanting at 5 o'clock. So if there is anything, I think Vijayaraman should reschedule it. WCC link alone. Yes, So it is there in WCC till 6 o'clock. Yeah, that's it. Sir, one small clarification, if I am allowed. So we have the global chanting of Vishnu Sahasranamam up to 6 o'clock. So tomorrow, we do not have the Tirupavai chanting as we do on up to today. So after the global chanting of the Aganda Parayanam gets completed, we will just have the singing of Tirupavai, 30th Tirupavai, and the explanation by Guruji, which will mark the closing ceremony of Maargazhi Mahotsav, if I have understood it rightly. That's what I'm telling. In the WCC link is only for Akanda Sahasranam, that is only up to 4 o'clock in the morning. If there is any confusion, I will ask Vijayaraman sir to complete and read schedule, because this in that same WCC link we close at 4 a.m. 4 to 5 we have this usual program like what we are having today. I hope it's clear, no? Vijayaraman will have to reschedule, sir. Yeah, something we'll do that because tomorrow, 4 to 5 and 5 to 5:30 as usual, the global chanting of Singapore, followed by everything, and 6:05 we have that after the news, some small felicitation to thank Guruji and others those work for this program. I think sir, already allocation has been made till 6, sir. Because we earlier plan, I didn't know this, so we have made the allocation till 6. No, we have been. Can give another link for that, sir. We will do that, sir. We have been doing. Only another link we can give them. I think Vijayaraman sir, don't worry. We'll discuss after this. I think that has to be accommodated, or else we have to cancel it. I think the cancel means you cannot cancel it, that Singapore program. Okay, that is the usual chanting. So there is a little confusion, not to worry. We'll sort out during daytime, sir. But anyway, right now we have that program for WCC 4 to 6. We have the usual program, and we are ending it tomorrow. I hope it's clear. Vijayanath sir, will work it out, sir. Yeah, it is clear, sir. We have been making a lot of changes since yesterday. One more thing, because in such a huge 700 satsang, 4 links and so many things, it is bound to happen. We'll take it and regret for any confusion. Okay. Thank you, sir. Over to you, Sri Priya. Today is the chanting by the Malaysian team. You want to conclude? Namaskaram, sir. Sir, namaskaram, sir. This is Kalpana. Actually, I want to know for the link one, for who are coordinating for these links, Akanda Parayanam, sir. I want to know link one. What is the link? Is the WCC link same link or any other link? Yeah, it is WCC link till 4 o'clock at least, ma. Maybe after 4 it might change as different. Our doubt is something different. Vijayaraman can clarify. I mean, I like that. No, sir. Our team, actually, at 7:30 we had to chant 2 teams, 2 avartis by Malaysia team. So in one of the group I got WCC link and another group another link. That's why my small doubt. So today at 7:30, today at 7:30 same link we are using or not? That is my doubt. Yeah, there are 4 links, ma'am, and I see that you have registered in WCC link, in link 1. So your yes, sir, link 1. Your satsang will be in link 1, which is WCC. But she said she has booked 2 slots, sir. Yeah, 7:30 and 7:50, same. Okay, sir. Link 1 only. We will use the same WCC link. Thank you, sir. Both of these 2 slots are for the same group or different group, ma'am? Different groups, sir. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. If any doubt, they can clarify after the global chanting with Vijayaraman sir on message like that. Over to Sri Priya for handing over to Malaysian team today. Happy Vaikuntha Ekadashi, happy Makara Sankranti, and let us have a strong Viswas unity. Soumya.
prayer சொல்றேன். What would you say, Priyama? I'm going to say the Sri Rama. The start பண்ண போறாங்க. Vijay madam, can you just please mute it? Over to Sri Priya madam for the chanting of Vishnu Sahasranamam on the global platform. ராஜலட்சுமி மேடம் நீங்களே சொல்லிடுங்க. ஸ்ரீபிரியா எனக்கு தெரியல. Sir, but details, I don't have the details. So you can just make an announcement. Yeah. That's okay, man. Now what you can do, since it's already 5 o'clock, we'll have the announcement later also. That you can request, or I can request Kalpana ji to take it over wishes to Malaysian team. You can start, Kalpana ji, please. Okay. Sure, sir. Yeah. Thank you so much. Over the, handing over the global platform to Malaysian team. Kalpana ji, you can take over from here. Thank you, Rajalakshmi. Very happy to chant today's on this auspicious day, on this Mukkote Ekadasi. We'll start today's satsang with Vijay ma'am's prayer and pledge, followed by. Vijay ma'am, you can start. ॐ नमो वेङ्कटेशाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो नारायणाय श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ॐ नम इति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे Om Namo Narayanaya, Om Namo Venkateshaya. I, Lakshmi Lavanya Ramaya, residing at Kuala Lumpur, Malaysia, will be taking Sri Vishnu Sahasranamam forward to the future generations. I will seek God's blessings before I start my day. I will hold my parents and gurus in highest esteem and treat them as God. I will let elders be my guide and respect all women as I would my mother. I will strive for purity of heart, soul, and the environment. I will uphold the honor of my motherland and strive for harmony. I will be a guardian of my family, social, and cultural heritage. With this pledge, I start my chanting. God, bless me, help me, and guide me. Om 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 Shuklam Bharadaram Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam Prasanavadanam Dhyayit Sarva Vignopashantaye Yasyat Virada Patradhya Parishadhya Parashadam Vignam Nignanti Satatam Vishwaksenam Tamashraye Vyasam Vashishta Naptaram Shakte Pautramakalmasham Parasaratmajam Vande Sukatatam Thabonitim Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidaye Vashishtaya Namo Namaha Avikaraya Shuddhaya Nityaya Paramatmane Sateka Rupa Rupaya Vishnave Sadvajishnave Yasya Smarana Matrena Janma Samsara Bandhanat Vimuchyate Namastasmai Vishnave Prabha Vishnave Om Namo Vishnave Prabha Vishnave Shri Vaishambhayana Uvacha
श्रुत्वा धर्मानशेषेण भावनानि च सर्वसः युधिष्ठिरशान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तकं कमर्चन्त प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः शततोचितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवनमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतमहोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन रः सदा परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणम् पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपति विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शूर्भवो बीजं शक्ते देवकी नन्दनः त्रसाम हृदयं तस्य शान्त्यत्ते विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायण देवता अमृतां शूर्भवो भानुरुति बीजं देवकी नन्दन षष्ठीति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शाङ्खधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम् रताङ्गपाणिरक्षोभ्यैति नेत्रम् रसामसामगसामीति कवचम् आनन्दं परब्रह्मीति योनिः ऋतुर्सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्री विश्वरूप इति ध्यानम् श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थे सहस्रनाम जपि विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्व प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभै मौक्तिकै मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै उपरि विरचितै मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीना पुनीयातरिनयनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यस्य नाभिर्यदसुरनिलच्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरौ द्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः
अन्तस्यं यस्य विश्वं सुरनरविभवो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवन बभुषं विष्णुमीशं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूकृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सपरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामं मायताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिगकुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञकृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहत् संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृक्षकेऽपि रमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृक्षकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतशाश्वतश्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदाव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्यूहः चतुर्जन्त्रश्चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः
महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपु श्रीमान् अमेयात्मा महादृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहास् सन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो दुर्मर्शानस् शाष्टा विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पति रुधारदिः अग्रनिर्ग्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्ता विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्त संप्रमर्दनः अहसंवर्तको वह्निर्रणीलोदरनीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृत साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंज्ञेयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदसिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपश्चिपीविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजो दिदिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशूर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः ससबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगदस्सेदुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवनाद भवनपावनो नलः कामः कामगरुत्कान्तः कामप्रद प्रभुः युगादिगुरुयुगावर्तो नैगमायो महासनः अतृश्यो व्यक्तरूपच्च सहस्रजिदनन्दजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेशः सिगण्डी नौषो वृषः क्रोधः क्रोधगुरुत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रदिद प्राणदो वाशवानुजः अभां निधीरदिस्तान अप्रमत्त प्रस्थितः स्कन्दधरो दुर्यो वरुदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर् आदिदेव पुरन्दरः असोगस्तारणस्तारस् सूरः सौर्यजनेश्वरः अनुकूलः सदावर्त पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महर्देरुद्रो वृत्तात्मा महोत्सो गरुडध्वजः अदुल सर्वभीमः समज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीमान् समिदिञ्जय विक्षरो रोगिदो मार्को हेदुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानविदासनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामकः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः
यज्ञ इज्यो महेज्वश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोदनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदशरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभेस्ति नेमिः सत्वष्टः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भुक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्तात्मा महोदधिसयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभव्यो जितमित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मत्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशत्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दशुषेण कनगान्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदस्वङ्गोजित कृष्णो दर्हः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः ध्रुवः सुक्सर्वदृग्वासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांवरः श्रीधः श्रीसः श्रीनिवास श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः सतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतच्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अत्युष्मानच्युतकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः सौरिः सूरजनेश्वरः लोकात्मा तु लोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणः प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतरणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो तापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सबः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः जो वृषोद्युति
सर्वशस्त्रभृतां वरः निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गस् सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वर महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो स्वस्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राच्युः सप्तजिह्वः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गृणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वस्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमैतादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियर्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः शुचिः हुतभुग्विभुः रविर्विलोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विन्नः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्थितः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः वित्वतमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्राणवप्पनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुक्
यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यं मन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितीशा पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदेशांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणोर्विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदेशांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणोर्विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदेशांगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणोर्विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीवासुदेवो विरक्षतु ॐ नम इति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमृतेः च मानवा वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धस्य शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मार्धी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्धी चार्धमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्धी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सदोताय शुचि सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यस प्राप्नोति विपुलं ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येदापन्न आपदः दुर्गानतिरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुखख्याति श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च माश्चर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे दौसचन्द्रार्कनक्षत्र खन्दिसो भूर्भुवो दधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षतं जगत्वते वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि महाबुद्धि सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचारं प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानः तथा साङ्ख्यं विद्यां शिल्पादिकर्म च वेदां शास्त्राणि विज्ञानमेतः सर्वं जनार्दनम् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूता अनेकस्कसं त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभु गव्ययः
इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठ्यते इच्छते पुरुषः श्रेयं प्राप्नोति सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगतं प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः। ॐ नम इति। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु त। ॐ नम इति। पार्वत्य उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानन। ॐ नम इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीसहस्रकोटियुगधारिणे नम। ॐ नम इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आर्था विषण्णाशिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्था विषण्णाशिथिलाश्च भीताः घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम। Thank you, Malaysian team, for the wonderful chanting today. Thank you also for enabling us to chant with you on this sacred Vaikunta Ekadashi day. The announcements for the rest of the day. The evening we have chanting by Indian A batch, A214. Prior to that, there will be a Nama Sankirtanam for half an hour by Shravana. And today afternoon, the Nama Sankirtanam from 2 to 5 will be held, but that will be held in a link other than this WCC link. I'm just posting that link in the chat box. You can note it down. We will also send a message in the various groups about the change in the link. Tomorrow morning we have the Singapore team, Singapore, Hong Kong and Japan doing the Vishnu Sahasranamam at 5 a.m. in the morning. Again, that will be in the WCC link. Thank you. Thank you, Malaysian team. We will have the closing prayer after the news bulletin. Over to Rajlakshmi Madam for further proceedings.
Thank you, Malaysian team, for the wonderful chanting of Vishnu Sahasranamam on this global platform. Before we move on to the next program of singing of today's Tirupavai Pasuram by Anantashri Atreya, who is joining us from Bombay, and followed by the discourse by our Guruji. Small announcement that we have an inaugural function of Aganta Parayanam of Vishnu Sahasranamam chanting by various Vishwas satsangs on various links. The links have been given to the respective satsangs. The coordinators and the satsang are requested to follow it and see that the Aganta Parayanam goes on successfully. It starts today morning with a small inaugural function and goes up to tomorrow morning 6 a.m. We have the closing ceremony of Maargazhi Mahotsav of VISVAS tomorrow with the chanting of the 30th Pasuram, though the Maargazhi month ends today with the 29th, today being the last day of Dhanur Masam. Tomorrow we will have the closing ceremony of Maargazhi Mahotsav with the 30th Pasuram and the discourse by our Guruji again, and with felicitations to the devotees. So with this, we move on to the next program of the day. Anantashri, are you there, ma? Yes. Yes. Only one correction. Margazhi is there tomorrow also. The Thai is the falling only tomorrow afternoon around 5:53 or something like that. So yes, sir. So we are there to celebrate the 30th day. Yes, you are right. Guruji always corrects the his disciples. Thank you, Guruji, for that. Anantashri, just give a brief introduction about you and sing today's Pasuram 29th. And she is the one who sang the first Pasuram of the month. Welcome, Anantashri. You can just introduce and start singing. Namaskaram. I am Anantashri Atreya. I am studying in the 5th grade. Today I am going to sing the 29th day Pasuram. Sitram Sire Kale Vandunai Sivitun Potramaraiyadiye Potrum Porul Kelai Petam Netunnum Kulathil Yam Pirande Kutre Valangalai Kollamal Pohadu Itrai Parai Kolvan Annukan Govinda Etraikum Ere Piravikum Mundanodu Utromeyavom Unake Namachaivom Matra Inankamangal Matridoyam Pavai Chitram Sire Kale Bandunai Sevitun Potramaraiyadiye Potrum Porul Kelai Petam Netunnum Kulathil Yam Pirande Kutre Valangalai Kollamal Pohadu Ittai Parai Kolvan Annukan Govinda Etraikum Ere Piravikum Mundanodu Utromeyavom Unake Namachaivom Matrainam Kamangal Matriloyam Pavai. Thank you, Anandashri. Over to Guruji. Om Namo Venkatesaya. Lakshmi Natha Samarambam Natha Yamuna Madhyamam Asmad Acharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shri Vishnu Chitta Kulanandana Kalpavallim Shri Rangaraja Harichandana Yoga Drishyam Sakshat Shamam Karunaya Kamalam Vivanyam Godamananya Sharana Sharanam Prapati. Om Namo Venkatesaya. Let's move on to the Pasuram number 29. In fact, this is said to be the most important, one of the most important Pasurams of Tirupavai. So people are not able to chant the entire 30 Pasurams. They chant 29 and 30. 29 talks about what is the ultimate moksha, what Vaishnava Siddhantam talks about moksha. And fortunately for us, that coincides on this Vaikuntha Ekadasi, which is also called as Mokshada Ekadasi. That is the once someone observes this Ekadasi, they will get moksha. So incidentally, there's a very strong coincidence that is happening. So let's move on to the Pasuram. Chitran Jirgale Vandu Unnai Chevittu Un Pocha Marediye Porchum Porul Kela. Chitran Jirgale. Kale means morning. Shirikale means early morning. Chitran Jirgale. That means very, very early morning. So you all started very, very early morning in this Margazhi month, and Vandu, you all come all the way from our places. Unnai Chevittu. So why is he talking about Chitran Jirgale? I want to come because
Krishna will go for tending of the cows maybe once it dawns. So we won't have time to meet you, and therefore we will come early in the morning, very early morning, so that you'll be available. That's what it is. Vande means all along the previous night we have been thinking about all those things, about all this moksha and other things. Then we found that we had a karpanyam. That means we, on our own efforts, we will never be able to get moksha. So that is what that is karpanyam. And therefore we thought that we should come to you only. So that means Vandu Unnai. Unnai means you are Dayaparan. So that means you are a Karunamurti. And therefore only because of your grace only we can get, because we all with all our efforts, however much we make, we will not be able to achieve moksha only unless your grace is there. And that's why we have all come all the way from there. Unnai, that means you are the Dayaparan, you are the Karunamurti, and therefore we have come and surrendered before you. Vandu Unnai Sevithu. Sevithu means this is truly reflecting of this Upanishad mantra, that is the Isavasya Upanishad, the 18th mantra. Agni Naya Supadaraye Asman Vishvani Deva Vayunani Vidvan Yodyasmat Johurana Menaha Bhuyishtam Te Nama Uktim Videma. That's the last word, is Bhuyishtam Te Nama Uktim Videma. That means let our salutations to be again and again to you. That's what the mantra says. Same thing. Vandu Unnai Sevit. Sevit means we want to do Anjali. Anjali is joining the palms together. The meaning of Anjali is Am Jalayati iti Anjalihi. That means Am means A means Bhagavan. Aksharana Makarahum. That's what Bhagavan says, Krishna. So that means I is Bhagavan. Am Jalayat. That means the moment you do like this, Bhagavan completely melts. He thinks that my devotee is completely surrendered. I'm not able to do anything. So the tears start rolling out from the Bhagavan and the Pirati's eyes. That's why it is called as Anjali. Vandu, we want to do this Anjali to you. Vandu un Pottramaraiyadiye. So pon plus Tamarai plus Adi Pottramare. So that pon means it is very valuable like gold. Tamarai means it is lotus. Bhagavan's feet is the lotus. Adiye, that means that we want to Adiye Potrum Porulkal. That means we want to sing praise of the divine lotus feet of the Bhagavan as such. Potrum Porulkela. So that means, very interesting observation made by one of these poets. He said, normally this lotus flower grows only in water, but it is very strange. From the lotus flower has come water. What is that? The lotus flower is Bhagavan's feet. From the lotus flower came what? The Ganga river. So that is not, it is the other way around. So from the lotus flower, the Ganga came. So that means the lotus flower of Bhagavan, we want to, praise, in praise of his lotus feet of Bhagavan. Pottramaraiyadiye Potrum. In fact, if you look at the first pasaram was, is a preparatory. Then the 30th pasaram, Mandal completes, from the first pasaram to 29, she considers herself a gopi. The 30th pasaram has become Mandal because she says Bhattar Viran Godeshwarna. So that means up to 29 pasaram she has been in this as gopi. So the second pasaram also Paramanadi Padi. Here it's also Pottramaraiyadiye Padi. So that means she is completing the second and the 29th Bhagavan Adi part of that. That is talking, praising the Bhagavan's lotus feet. Pottramaraiyadiye Potrum. That means we want to sing about all this, that is what we are trying to do. Porul Kela. There are two ways of interpreting. That means we want to get this Porul means we want to get this Artham. That means what is the objective is always to sing in praise of your lotus feet. That is one meaning of that. The other meaning is Porul Kela. Then they are saying, why are we chanting this? We are praising this lotus feet. We want to know what is the reason why we want to do that. I will tell you the reason why we are doing this Anushtanam of, this praising your lotus feet. Pottramariya Potrum Porul Kela. Petram Meitunnam Kulatil Pirandil. So that means Petram Meitunnam, that means the cattle. Our Kula's dharma is only tending the cattle. Petram Meitunnam, our livelihood is dependent on the Kulatil Pirandil Ni. That means you are born in this particular Kula of this, tending these cows, the Adava Kula. Kuttreval Engalai Kollamal Po. That means you are born with a particular purpose. You are a Paratatam. You are Siman Narayana residing in Vaikuntham. There is a reason why you have taken a birth in our particular clan. Maybe obviously for the sake of blessing all of us. That's the reason why you have taken this birth. So that means you are born in this birth. And therefore, Kuttreval Engalai Kollamal Pokadu. Kuttreval means Kuru plus Seval. Kuru means very short errands. They are not saying that you make us like Vyasa Bhagavan trying to compose Brahma Sutrams or Puranas. We are not capable of that. We are not competent. All we want is little errands, small errands. Kuttreval. That means you just say, you come here. I want to rest my hand on your shoulders. Okay, those are all small errands. We want to do only small errands because in the small errands, you always have the opportunity of coming back to Krishna very soon. If you have a long, if it is given like Vyasa Bhagavan or something like that, then you will have a longer period of away from the Bhagavan. Whereas short errands will always have an opportunity to be always with you. So Kuttreval Engalai Kollamal Po. That means you are born with the purpose of blessing all of us in this particular. That is why the reason why you are born in this Yadava Kula. And then having born in this Yadava Kula, you cannot refuse
our whatever small errands that we want to do. The one implication of that is, even to do Kainkaryam, Bhagavan must, permit us to do the Kainkaryam. So it is not like, no, I want to do service to Bhagavan. It doesn't happen, because Bhagavan must permit you to do that. So that is where you are dependent on Bhagavan, all things. Even to do Kainkaryam, Bhagavan must say, yes, I permit you to do Kainkaryam. That's what she's saying. Don't refuse whatever errands that you want to, small errands that you want to do for you. That's what she's saying. So that means, okay, fine, you want all this to do Kainkaryam to me, okay, do it for today, and then you can go back home. That means that means we don't want this Kainkaryam to be done only for today. Andru means not only for today. Itchai means today. Okay, Bhagavan says, okay, you want to do some Kainkaryam to me, okay, do it today, then you can go back and then you can relax. That's what. That is not what we want. Itchai Paregolvan Andru. Kan Govinda. Oh Govinda. Again, the third time she is using this person, this Govinda. In fact, when you do the Sankalpam, Govinda, 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 we say 3 times. Similarly, Andal is also doing the Sankalpam of this, Moksham, and therefore she is talking Govinda, Govinda, Govinda towards the end. That's another way of looking at it also. The other way is, they are trying to abuse Krishna by using this Govinda. You see, saying, this, you are saying that you do Kainkaryam for only one day. Have you lost your senses? Have you lost your intellect? Because you are going after the cows. That means Govinda means one who is going after the cows. So since you are going after the cows, maybe you lost your intellect. We don't want only for doing Kainkaryam only for today. And the other meaning is, incidentally, in this Govinda, the Goda is also, is embedded into the Govinda. If you remove this, the letters V and In, it becomes Goda. So Goda is already in Govinda itself. That is what Goda is already merged into Govinda as such. So Goda. So that means he's also talking about, I am Goda. I'm always in you. That's what Govinda goes. So you cannot refuse me. That's what is the reason why she's saying this Govinda, and then Goda is inside her. It's being talked of already in the 20th Pasram. That is, you cannot Orika Oriyadu. That is, all of a relationship between the two. The Jivatma and Paramatma is permanent. It's always there. So you cannot completely remove it. Even in the name Goda and Govinda is already embedded and merged into us. Therefore, you cannot refuse that relationship between the two of us. Govinda. Yatraikum Yezhel Peravikkum Undannodu Utrome Avome. That means, not only today, how many births you take. We are not asking for you to please give us and take us into Vaikunta. We don't mind that. We don't want that. We don't. If you say that no, you have got to go through all this. You'll have to be born in this world. Maybe not only in this world. Maybe in any of the 7 plus 7, 14 worlds. Doesn't matter even if you take. That's what one of the Nayanmar said. Puruvai Pirakinam Punya Unnadi Enmanate Valvadirikavaram. That is, even if I am born as a worm, Puruvai Pirakinam Punya Unnadi Enmanat. That means your feet should always be in my heart. That is what she's saying. It's that one of the Nayanmar said. Similarly, Yatraikum Yezhel Peravikkum Undannodu Utrom. That means how many months we take. So that is why that is the difference between Bhakta and Jnani. Jnani will always want moksha. That means he doesn't want to be born again. Whereas the Bhakta doesn't mind. Bhakta leaves it to the Sankalpam of Bhagavan. Bhagavan must decide what I should do. That's what I am saying. I am surrendering to him. So if you want to take me to Vaikunta, fine. If you don't want to take me to Vaikunta, that is also fine. That's fine. But only thing I need is always. That means all our relationship must be there always with you. Like for the current relationship of this in this Krishnavataram. However, how many months? So it doesn't matter. Even if we take hundreds and millions of births, don't mind. We don't mind taking that. But that means we must always have relationship with you. That means you must always be with us. That's what it is. That means we also that means that means Ananya Seshatum. That is nobody else other than you is our ultimate goal. And therefore that means we want to do Kainkaryam to always Achyam. That means we are servants under you. In different paths we may take, we will be completely under your feet only. So that means we'll do Kainkaryam to you only. That is what our goal is. Matsainam Kamangal Marchelo Rimba. That means he's saying, don't suppress all our desires. All our desires must be sublimated. So that is what this all our desires must be sublimated towards you. That means we must direct all other desires must get completely devoted to you only. So that means the only one purpose. That is what like Bhagavan said. Ananyas Chintayantomam Ejana Paripat. Anya Chinta. That means you should not have any other Chinta other than you only. So that is what Bhagavan says in Gita, chapter 9. So we should have only, whatever desires, all other desires which may have, please sublimate all the desires in towards you. That means we want to do only Kainkaryam to you and you and you only. And however, whatever be the birth that we take, will be ultimately only be doing Kainkaryam to you. That is what is the Samam Bonam of this particular Pasram. It's one of the beautiful Pasrams, and then this complete
the moksha, what is the moksha is being defined in this particular pasaram, the Purushartham. So the 15th pasaram was Bhagavata Kainkaryam. That is what we saw that in the 15th pasaram, L.A. Ilangaliye. This 29th pasaram is Bhagavat Kainkaryam. So both are important in Vaishnava Siddhanta, Bhagavata Kainkaryam as well as Bhagavat Kainkaryam. So Bhagavat Kainkaryam is talked of in this part. This beautifully defines what moksha is. Moksha doesn't mean that, we want Bhagavan to take you to the Vaikunta and then do service there. So it says, I am leaving that choice to you. So you are the one and one person, like Bhagavan says, Mamekam Sharanam Praja. So they are doing that. That means you are the only person, Ananya Gatitvam, and then Ananya Seshatvam. That means you are the means as well as you are the goal. There is nobody else other than that. So that's what, when you approach somebody, if you say, sir, I am totally depending on you, I am not approach anybody else. Suppose if you tell that person, I've spoken to a few others also, what that person will think, okay, he has spoken to other people also, so let them take care of it. Not like, if you say the person, I'm only depending on you, that means that person will take more interest. Similarly, these people are saying, we don't want anybody else. That means you are the only soul and the whole objective of our existence. So that's what we want. So ultimately, so the moksha means three things. That's what Andal is talking here. That means we should always be related to you in whatever bets we take. So it doesn't matter if you give hundreds and millions of birth, doesn't matter. We'll take that birth, but you must be there always with us. That's one. Second is that means we should always be doing Kainkaryam. So please permit us to do this. You want to do, as I told you, you want to do Kainkaryam. Supposing somebody comes and says, I want to do service to you, we don't accept it as it is, because we know, I don't know how that kind of a person, whether really interested in doing service to me or something like that. So unless we permit, he cannot do service to us. Similarly, Bhagavan, they are saying, we want to do Kainkaryam, please permit us to do this Kainkaryam. That's what it is. And then whatever other desires have, completely sublimate all our desires in towards of, ultimately reaching this goal of, Bhagavan as such. That's what is this particular pasaram. So this is one of the wonderful, beautiful pasarams. And then Andal concludes as the Gopika. And the 30th pasaram is only Palashruti. What she's saying is what will happen if people chant this 30th pasaram, the 30 pasarams regularly. So we started with the Narayanane Namakke Parai Turvan. That's what she started. And he's ending with Parai, definition of this what Parai is. So that means Parai is ultimately Moksham. Moksham doesn't mean going to Shiva. In fact, one of the acharyas like in Tirumala, there was an Anantadvan. So when Ramanuja wanted this some Pushpa Kainkaryam to be done in Tirumala, one of the acharyas stood up. He said, Anantadvan. He said that I will go to Tirumala. So he says, you are the brave man. You are the male person. That means he has got this, courage to do that. So he went there and did that. So one day while he was doing his Nandavanam, so one of these, there was a snake, there was a snake, the snake bit him. So immediately the message was sent to Thiruvenkadamudiya, and also somebody went and said, no, then he said, why are you not applying any, medicines on this snake bite or taking something to, cure yourself? So then he said, doesn't matter, Bhagavan. So as long as if the snake's poison, I'm more stronger than the snake poison, then I will live in this world. I will do Kainkaryam too in this world. If the snake bite the poison is more powerful than me, then I will go to Vaikuntham and do Kainkaryam to those. That's what Kainkaryam is the ultimate objective, whether it is in this world or in this Vaikuntham. Then Bhagavan asks, how are you sure that you will get Vaikuntham? So only if I give you Vaikuntham, you can do. So then he said, I don't have to worry about you, Bhagavan, because my Guru has blessed me. When Ramanujacharya has blessed me, I'm absolutely clear that I'll get Vaikuntham. You don't have to, I don't need your permission because my Acharya has recommended, and therefore you have no choice but to give me Vaikuntham. So that's what the ultimate Vaikuntham is, doing Kainkaryam, whether in this world or in this south. That's why, even we can get Moksham is doing Kainkaryam here itself or doing it in any other place, wherever it is. That's what is being talked of in this pasaram. So let's do the 30th pasaram, the Palashruti, tomorrow and conclude this Kripa. Vishnu Chittari Manonandana Hetave, Nandanandana Sundari, Godaya Nityamangalam. Shri Goda Rangamanna Garudarva through relation of Om Namo Venkateshaya. Sir, Namaskaram. Thank you. Namaskar. After this, when you inaugurate Pundu, okay. I think 6:30 you can you got some other important words. 6:30 Polan, yeah, okay. And the news from please. Thank you, sir. Over to you. Thank you. Thank you, Guruji, for the wonderful explanation of today's pasaram. You very well explained the real meaning of Parai, which Andal used in various pasaram. That is moksha, which is nothing other than the divine service, not only in this material world, but also when the soul reaches the Vaikuntham. And for that, the blessing of Acharya is also very important, which is expressed by the episode of Anantadvan. So we as devotees of Vishwas who are listening to this Tripavai from the first day to the 29th day, we seek the blessings of Guruji, you, on this special day,
Ekadasi day to bless us all to get ourselves involved in this divine service. Thank you, Guruji, once again. Over to Vishwas News Bulletin now. Om Namo Venkateshaya, Om Namo Narayanaya. Traditional beliefs suggest that a person can rid himself of the burden of his wrongdoings and attain salvation by keeping a vrat on this day. Hence, the name Mokshada, where moksha means salvation. Also, it is said that the doors to Vaikunta remain open on this day. So today is Vaikunta Ekadashi. On this auspicious day, this is Rama Reddy welcomes you to the VISVAS News Bulletin. And today's news headlines are Dhanur month online chanting schedule, Vishwas global chanting, Nama Sankirtanam, weekly satsangs, Vaikunta Ekadashi 24-hour Akhanda Parayanam by Vishwas batches, Dr. Ramabhadranji's discourses, C syllabus course, and important events coming up in the next 1 month. Now, we have the global chanting and Nama Sankirtanam, for which details are given below. Maargazhi chanting. Before this news bulletin, devotees completed Tirupalli Ellochi and Tirupavai from 4 a.m. to 5:40 a.m. Dr. Ramabhadranji presented the discourse on Pashuram 29 of Tirupavai from 5:40 a.m. to 6 a.m. Vishwas global chanting. Hearing and chanting is the key to fix the mind on Lord Vishnu Bhagavan. When we are chanting, we need to just hear the sound vibration. At 5 a.m., VSN chanting was presented by Malaysia team. Evening VSN chanting will be presented by India A batch 214. Half an hour prior to that, there will be Nama Sankirtanam to be presented by Miss Shravana. Nama Sankirtanam. Nama Sankirtanam can eradicate all sins. Nama Sankirtanam is not bounded or limited by place or time. Dhanur Masa special Nama Sankirtanam from 2 to 5 p.m. and today's performers are Shashidhar Reddy will perform from 2 to 2:50 p.m. and Mr. Jayakanta Jagadishwara from Melbourne, referred by Sharadambika Vasagar from 3 p.m. to 3:50 p.m. There will be a pravachanam of Sri Ananda Dayanidhi Bhagavatar from 4 p.m. to 4:50 p.m. Due to special Ekadashi pravachanam, Parayanam, usual WCS link has been changed only for today. So dear devotees, the link will be posted in your respective groups. Please kindly note that. Now let us go to the details of weekly satsangs. Today weekly satsangs, Thursday, that is A batches 27, location 24, and Videsh 8 batches. Vaikunta Ekadashi 24-hour Akhanda Parayanam of Vishwas, Vishnu Sahasranamam by batches of Vishwas will be inaugurated after today's news bulletin. The Parayanam will be done throughout the world today from 6:05 a.m. and will conclude at 6:05 a.m. IST on 14th January 2022, that is tomorrow. There has been overwhelming response for the same, again displaying to us the power of Vishnu Sahasranama. Our Guruji Sri Ramabhadranji will complete the discourse on Tirupavai on 14th January 2022. From 15th January 2022, he will continue with the discourse on Kalashruti of Sri Vishnu Sahasranama. On completion of the discourse on Vishnu Sahasranama, it is planned that he will commence his discourse on the sacred Bhagavad Gita, covering 1 shloka per day. Now, a small detail about C syllabus course.
The exams for C syllabus certificate course will be held between 17th January and 19th January. The valedictory function will be held on 24th and 25th January 2022. Vishwas will be celebrating Bhishmashtami on 8th February 2022 with all-round chanting of Vishnu Sahasranamam. Now let us have a small glance on yesterday's news bulletin. After the news bulletin, as always, devotees completed chanting of Sri Venkateshwara Suprabhatam, Tirupalli Elluchi and Tirupavai from 4 to 5:40 a.m. Dr. Ramabhadranji presented the discourse on Pashuram 28 of Tirupavai from 5:40 to 6 a.m. Vishwas Global Chanting. Vishnu Sahasranama chanting was presented by team from Australia at 5 a.m. Evening at 6:15 p.m., VSN chanting was presented by India batch 213. Half an hour prior to that, Nama Sankirtanam, we had performance presented by Miss Manju Bhashini. As always, the Dhanur Masa special Nama Sankirtanam from 2 to 5 p.m. at the Global Chanting link was presented by different performers. That's all for today's news. This is Rama Reddy signing off. See you in next bulletin tomorrow at 6 a.m. Have a nice day. Once again, happy Vaikunta Ekadashi Shubhakankshalu to one and all. Thank you, Rama Reddy. Rajalesh ma'am, I think we don't need to have the ending prayer today as the program continues. Okay, sir. Continue with the program now. Happy Pongal, happy Vaikunta to all of you. I think you can start today's celebration. Our patron Murali sir also here. Sir, namaskaram sir. Welcome you sir. And our trustees are also here. Namaskaram. Sorry, early morning disappointama. It's a pleasure for us. Morning. We are working from 3:45 daily all these 30 days and today and tomorrow also. So can we our 2 minutes arrange the program? Please. I think Raghavendra Sharma ji, can anyone remind him also, sir? Anyone just to join? In the meantime, Rajlakshmi, you can start the program. Our patron Murali sir is all in all. In fact, you would be very happy to listen to the news, sir. News எப்படி இருந்தது, sir? Excellent, sir. Excellent. Excellent. Imagine dream, உங்க dream 5 வருஷம் முன்னாடி இருக்கும் இல்லையா? அதே we are trying to do it, and this will be done in all the languages very soon. Within a month, all the Indian languages. Thanks to Rama Reddy from Hyderabad. Murali sir is our patron. He is complimenting us today, and we will be going in all the languages very soon, morning and evening. I think the growth is continuous. So we need your blessing, sir. Yeah, you also always think big, sir. Thank you, sir. Lord Narayana always with you. Because good things are happening. One second, I remember when we started 20 years back, ஒரு 1000 குழந்தைகள் 1 லட்சம் மிக 1 லட்சம் 10 லட்சம் மிக that is the thing. And நீங்க சொன்னது it is coming true. Even if it is crores, today we are doing every crore every week. And today in the 4 channels, I think we'll be touching more than 10 crores. The crores is nothing for Viswas because of the power of Vishnu Sahasranamam. Sir, be with us for 20 minutes முடிச்சிருவோம். Rajlakshmi ma'am, over to you, ma. Thank you. Namaskaram, Murali sir. Namaskaram, namaskaram. Satsangatve nishangatvam, nishangatve nirmohatvam, nirmohatve nichalatatvam, nichalatatve jivan mukti. With the association of good sattvic spiritual people, one develops detachment from the worldly desires, which results in the attainment of enlightened detachment. This results in freedom from delusion, and from freedom from delusion comes one-pointed mind for peace, and from this comes mukti, or the liberation of the soul. One who comes near the flower experiences the fragrance of the flower. However, the ones that truly enjoy the flowers are the bees that enter deep into the flowers to draw out their nectar. Similarly, those who truly enjoy the names of namas of God and God himself, the ones who observe the meanings and the message the namas convey and reflect upon them, those
who live the philosophy and use it to rise spiritually are the real ones who enjoy the divine and the blissful experience and live in the present. Vishwas is committed to take Vishnu Sahasranamam to the nook and corner of the world with its 5D principle: devotion, discipline, dedication, determination, and development. Blessed to be a part of Vishwas. I take the privilege in inviting all the ones, the Gurujis, patrons, and the devotees of Vishwas for this 29th day of Maargazhi Mahotsav, and being a special day of Ekadasi for the auspicious Aganda Parayan chanting of Vishnu Sahasranamam. This month, Maargazhi, is very special and very auspicious, as Krishna himself said he is the month of this Maargazhi, and it's special to Andal and our devotees. Today, being still auspicious as it is the Moksha Ekadasi or Vaikuntha Ekadasi. Serving humanity with spirituality is the mission of Vishwas, and we have rightly the Aganda Parayanam of Vishnu Sahasranamam chanting starting from now in a few minutes after the brief inaugural function, and it will remain till tomorrow morning 6 a.m. This Vaikuntha Ekadasi special chanting will be 24 hours online chanting in 5 links and satsang links involving devotees from 36 countries, around 700 satsangs participating in it. We now have a special guest who is also the chief patron of Vishwas, Sri Muraliji, with us. A brief, though he does not require any introduction, a brief note on Muraliji, who started his business as a young entrepreneur. He is, apart from his business development, he has a vision to serve the humanity, to serve the mankind. With the income generated from his business, a small portion of it has been spent on various activities for the upliftment of the society in the various areas of arts, culture, education, helping the poor, and whatnot. He's the organizing the Muraliji, through his organization, is organizing various activities across the globe throughout the 365 days of a year. And there are much more things to say about him and his spiritual and social responsible activities. And we are proud to have him with Vishwas. And we welcome you, sir, on this special day of Vaikuntha Ekadasi, which is very auspicious also, and for inaugurating this Aganda Parayan of Vishnu Sahasranamam. Now, to start with the day, we will have the prayer and pledge. Can we skip today, Ma? Prayer and pledge? Early we Okay, sir. started. Okay. So I request Sridharji for his inaugural address. Om Namo Venkatesaya. Today is a very auspicious day because every second we want to chant. That is why I just took 2 minutes only. Power of Vishnu Sahasranamam and your Visvas and ISO 9000 organization. Today being Vaikuntha Ekadasi, another important day for us. As said, 36 countries, 700 satsang in 5 different links. I think the team has been working for the last 3 days, 24 hours to give the best possible. We are proud. Today we are the only one institute flowing in such a very fast way. That is again because of power of Vishnu Sahasranamam and the foundation laid by Dr. Murali and Dr. Raghavendra Sharmaji and our trustees all are here. And today we are having in 5 different links. And also we are proud to say with 700 satsang today and another 50 satsangs are being added every month. So we are unable to imagine the growth of this mission. And that is where the entire spiritual organization like Tirumala Devasthanam, ISKCON and all over the world appreciating is. Let us continue the journey. I am thankful to Vishwas Global Team for this opportunity. And now I request you to request Murali sir to say. After that, our Raghavendra Sharmaji is not here. So we can request Raghavendra sir to say a few words on Vaikuntha Ekadasi.
and then we have to start in the other so many links, and the office bearers have to join the other link at 6:30. Over to you, Rajalakshmi. You can request Murli sir to address. Thank you, ma'am. Om Namo Venkatesaya. Thank you, Srijarji, for the opportunity given to me. I take the pride in requesting and inviting Murliji to bless us with a few words. Namaskar. Om Namo Narayana. What excellent. Vaikunta Ekadasi is a day for Perumal. Ekadasi every month comes. Vaikunta Ekadasi yearly once comes. Ekadasi means we must have a fasting and completely think about on the one whole day we think about goodness. Goodness means reaching to the God. Whenever I attend that Vishnu Sahasranamam's functions or anything, I am very much pleased because எப்படி ஒரு ரோஜா தோட்டத்துக்குள்ள போயிட்டு வெளியில வந்தா மேல அந்த ரோஜாவோட வாசம் இருக்குமோ, அட்லீஸ்ட் வெளியில ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்தாலே போதும். ரோஜா once we enter to rose garden and come out, the smell is with us. Even we are going out somewhere 10 to 20 minutes, the smell is to us. The same way, once we attend the Vishnu Sahasranamam, the Narayana Jabam or Narayana's energy level, we can completely with us every day. So every day we chant Vishnu Sahasranamam with total dedications. It makes a lot of difference. All day is completely better happiness. Vishnu Sahasranamam is something like that. Once morning you chant Vishnu Sahasranamam with full meditation, you get a lot of energy. That take you up 23 hours. Once you spend 1 hour for you, another 23 hours is taken by Narayana. That is Vishnu Sahasranam's power. The food is connected with mind. Today everybody have a fasting. The food and mind and intellectuals are same in one line. That is today. As usual, whatever Sridharji and the team done, it must be the maximum. And they do lot of love and affection. That is the greatness of this Visvas. More than 20 years, I know Mr. Sridhar and Mr. Visvas. Their affection to the Visvas and affection to the peoples, amazing. That energy, total energy is given by Lord Narayana. Lord Narayana was act to the team, Visvas team, through Visvas team to bless us. There are, எப்படி சொல்லுவேன், ஆசைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் விஸ்வாச பத்தி. விஸ்வாஸ் வந்து ஒரு வெறி, நல்லது பண்ணணும்னு ஒரு வெறி மாதிரி சங்கல்பம் எடுத்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது. They want to do only good things to the society. They want to, all over the world, the Vishnu Sahasranamam must be listened. When Bhishmacharya say Vishnu Sahasranamam, that time only one person is there. I mean 4 or 5 people are there. The Krishna says Bhagavad Gita, only the Arjun was listened. That energy is completely transferred into lakhs and lakhs and lakhs of people now. How the Vishnu Sahasranamam comes, how everybody knows the history and everything. That energy of Vishnu Sahasranamam is through Visvas. Amazing. Next Vaikunta Ekadasi, all the Prabanja must be sounded Vishnu Sahasranamam. That makes a lot of difference. This time, that energy level most needed, because all the minds are disturbed because of COVID or anything. The minds are disturbed. So health disturbed, mind disturbs, everything, lot of things are there. So we chant Vishnu Sahasranamam, take a sankalpam today. Everybody must be happy. For that, Bhagavan Narayana come to the Kali Yuga
and blesses, the complete illness goes out. Everybody must be happy. All over the world, it is suffering. The Narayana can only change the world. We are praying, take a sankalpa. This Vishnu Sahasranam today is what we are doing. Aganda Sahasranama. The sankalpa is very clear. This energy level manage the COVID. And all the people must be happy, happy, happy. They must be happy. Thank you. Thank you very much for Sridharji. Your fantastic work and your goodness comes out. Your goodness and your thought process comes out. I am extremely happy to be a part of this. Om Namo Narayanaya. Thank you, Muraliji, for this wonderful words about the founder director and about Vishwas. Truly said, yes, with the driving force of Sridharanji and with the wonderful guidance from the gurus like Raghavendra Sharmaji, Ramabhadranji and Shivaramakrishnaji and many other gurus at Vishwas, the devotees and the students of Vishwas are truly blessed, and this positive vibrations multiplies and multiplies. And as you said, by next Vaikunta Ekadasi, I join you in prayers that the Nama of Vishnu Sahasranamam should vibrate across the globe at every nook and corner of the world. Thank you, sir, for this wonderful blessing. Now, may I request Dr. Raghavendra Sharmaji? Murali sir, thank you for joining in the early hours morning. So, Raghavendra Sharmaji is there? கண்டுபிடிக்க முடியல. I think Suraman try பண்றாரு, பார்க்கலாம். We all need his blessings because he is a great guru. We are trying, sir. Without expecting anything, he was want to grow the Vishnu Sahasranama is very good level. I get you blessings of Guruji also. Thank you. Thank you. 5 minutes இருக்கேல sir? 5 minutes இருக்கேல? இருக்கு. I'll be with you. Thank you. Over to you, Raman sir, on Ekasi chanting and okay, thank you, sir. May I request Guruji Ramabhadranji? He doesn't require any introduction. People who have been watching the Maargazhi Mahotsav from the early hours will know how wonderful we get the meanings of the pasrams of daily pasram. Over to Guruji for his blessings. Om Namo Venkatesaya. Now this, my pranams to everybody on this panel. Now, briefly, let us talk about this moksha because I think more important is only chanting. Now, what does Ekadasi mean? Now, the story is that when some Asura was fighting with Bhagavan Sriman Narayana, he fought with him and then finally he didn't kill him. Then finally, he wanted to take some rest, so he moved to a cave somewhere in Badrikashram. Even today, if you go to Badrikashram, you can find an Ekadasi cave. So then that Asura followed him and then he found that he was inside the cave and therefore he entered into the cave. Bhagavan was taking rest. Then this person was killed by somebody. So then immediately when this Asura did, Bhagavan Vishnu woke up and said, what happened? Then he found some Shakti of Bhagavan himself came in the form of a female person, and then that person killed this person. So the Bhagavan was so happy with that and said, what is it that you want? So he said that she was named as the Ekadashi Devata. That Ekadashi Devata said, people who all fast on that particular day and take your name, they should all be blessed. So Bhagavan said, let it be. So that's how this whole episode of Ekadasi came. Another is a philosophy. If you look at the principle, tattvam behind this Ekadasi is, we have got this 10 indriyas, that is 5 jnanendriyas and 5 karmendriyas. And then we have this manas, this 11. So now all these things, the most important thing is the manas, the mind. The mind is if the mind is, it doesn't go after any of the sense organs, the sense organs by themselves may not be able to lead us into anything. For example, supposing I'm attending onto a particular task on a personal PC. Somebody tells me something, I'm concentrated in that PC. Then even though the word comes into my ear, it doesn't register in me because the mind is not at it. So only when the mind attaches importance to that, it becomes important. Otherwise, it's not important. So mind is the most important thing. That's so that the 11th principle is the manas. So one need to control the mind. If one controls the mind, everything else will fall in the place. So win the mind and win the world. That's what people say, Manohi Manushyanam Karanam Bandhamokshayoho. Manas is the cause of both attachment as well as for detachment. If it goes after the material or sense objects, it becomes an attachment. If it moves away from the sense object towards Bhagavad Sankal, like Rajalakshmi mentioned about Satsangatvam and Sangatvam. So if you move towards the Satsangatvam, then obviously it
is the one which takes you to liberation as such. So that is the mind is the most important thing. So all our Purva people, the Acharyas have said that you control the mind on the 11th day. So control, when you control the mind, that means you got to control the sense organ. That's why you got to do fasting and all this. Give a rest to all your sense organs. Doesn't mean only the mouth. There are all other sense organs like the eyes and other things are also must be controlled on that particular day. At least bring it into that habit. And then what is this upavasa? Now upavasa means upavasa. Upa means close, vasa means living. So living close to Bhagavan is the meaning of upavasa. Why did this name come as upavasa for fasting? So in the Kali Yuga, everybody said, no, this people said, I'm so busy, I don't have time, I got to go to office, I got to do my earnings, all those things are there. Then they said, do you spend time on eating? Yes, I said. How much time you spend? Half an hour. Okay, then don't eat on that day. Spend that half an hour for that, chanting the name of the Lord. So that is why the word upavasa came. That means fasting is, they call it in Sanskrit, they call it tyajyam as well as kartavyam. Tyajyam means there is do's and don'ts and the do's. Don'ts is don't eat food on that day. That means reduce your intake of food. Then do is what? Namasankirtan. That is what people forget. Upavasa means, I mean, I don't have to eat a lot of things. That is what they think. That is the don't portion. The do portion of is coming closer to the Bhagavan. That is what is chanting the name of the Lord. So that's the most important. Again, Vaikunta Ekadasi is much more important because Vikunta means obstacles. So Vaikunta means that Bhagavan who removes all the obstacles towards reaching the ultimate goal is called, that's why it's called Vaikunta. So anybody, even if you're not able to follow this 26, that is, we have got this 52 Ekadasis, no? That is 52 weeks. I mean, so 26 Ekadasis will be there every year. So even if you don't able to observe all these things, if you do this Ekadasi, that is equivalent to observing all the 26 Ekadasis. That's the significance of Vaikunta, because that is this what do you call this dawn for this Devatas, Ushat Kalam. That is this Brahma Muhurtam for the Devatas. So all the Devatas sing the praise of Bhagavan Vishnu. So we join along with the Devatas and chant the name of the Lord. And like Upavasa, we said, if we not only control the mind, we direct it, channel it towards the Bhagavan Nama. Definitely, that's why it is called as Mokshada Ekadasi. That means it is the one which will give us the moksha. Therefore, let's all join together in chanting the name of the Lord 24/7, as Muraliji mentioned. The whole universe should vibrate with the name of the Bhagavan. And if it happens, nothing is impossible. And all this, the pandemic and everything, let it, subside in the next couple of weeks or few months. And then when you chant the next Vishnu, the Vaikunta Ekadasi chanting, the whole world should be so happy and joyous in chanting the Vishnu Sahasranamam. Thank you for giving me this opportunity. Om Namo Venkateshaya. Thank you, sir. Radhalashi ma'am, now I think we have to start 6:30 chanting here, and other link also people are waiting there. You can request Sivaramakrishan sir to address concluding 2 minutes. Any trustee here, Shekhar sir? So that after Sivaramakrishan we can start it. And Murali sir, thank you very much, sir. Yeah, and yeah. Sir, namaskaram sir. One nimisham sir. No, we have to start the chanting now. Sir, நான் இப்ப ட்ரிப்ளிகன் பார்சாரதி கோவில் வாசல்ல இருக்கேன் சார். எல்லாரும் கோபுர தரிசனம் பார்த்துக்கோங்க சார். Thank you very much. God gift today. நீங்க அங்க இருக்கீங்க, தரிசனம் கிடைச்சதா உங்களுக்கு? பாஸ் கிடைச்சதா இல்லையா? இல்ல சார், உள்ள போக முடியல சார். நான் இங்க நின்னு ஒரு 2 ஆவர்த்தி இங்கேயே நின்னு சொல்லிட்டு வந்துடலான்னு இருக்கேன் சார். எனக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, சாண்டிங் பண்ண முடியலன்னு. அதனால கோவில் வாசல்ல இங்க மண்டபத்துல ஃப்ரீயா தான் இருக்கு, அங்க உட்காந்து ஒரு 2 ஆவர்த்தி சொல்லிட்டு நான் கிளம்பலான்னு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லதுமா. தேங்க்யூ. பெருமாள் வேண்டிக்கணும். முரளி சார் எல்லாரும் இங்கே தான் இருக்கார். ஓகே சார், சிவராமன் நீங்க கன்க்ளூடிங் ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த அதர் சேனலுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ வெரி மச் முரளி சார் ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ். பாத்துட்டீங்களா? காலியா இருக்கவுல. Thank you, Muraliji and Ramabhadran Guruji for the wonderful blessings. Request Sivaramakrishnan ji to bless us all for the inauguration of this Akhanda Parayan. Om Namo Venkateshaya. Best wishes to all of you. Today, as Ramabhadran ji already put it, Vaikunta Ekadasi, in this day, Moksha Ekadasi, Paramapada Ekadasi, in this day, when we chant Vishnu Sahasranamam, we all been given the moksha. That is, today is, and as Andal said in this today's Parsuram, it is not only he desires to serve in this day alone, and even for more and for all the births to come, out of the 8.4 million species, he divides into 14 birth groups, all these 8.4 million, and covers all the, whatever may be the birth we take.
either Vaikuntham, or even if Vaikuntham is not there also, even in any birth also, if he serves Sriman Narayanan, that itself is the enjoying the Vaikuntham. So we shall not only do service to you and only to you today, but also in the births to come, and also will remain related to you. We are going to be the relatives to you, Lord Krishna. That's what Andal says. And let us have this concept clear in our mind. And the Lord also takes innumerable incarnations. And in this Pasuram, we aspire to take bhakti every time when the Lord takes avatara to render eternal service. Or even if we take birth otherwise also, we need to be only with the Lord's Lord Krishna's service. Always we need to be related to him, not like Sita Devi or Bharata, who had to be in separation for some time, but like Lakshmana, who was ever with him in his service. And that service is not for our pleasure, but for the pleasure of Sriman Narayana, Lord Krishna. With this message in our mind, let us start this great Akhanda Parayanam today. Wishing you all the best. Happy Pongal, happy Makara Sankranti. Wishing you all the best. Praying Sriman Narayanan. Om Namo Narayana. Thank you, Guruji, for the blessings. Now I hand over the platform to the coordinators who are organizing, coordinating the Vaikuntha Ekadasi special chanting on the global platform. Should we have the closing prayer for this inaugural function, Ma? Sir, our Sridharji said that because we are starting with the chanting, we will have it tomorrow. Yes, I mean, after the end. Okay. Yeah, correct. I think we'll continue with that. Okay. Yeah. Request all the sorry to disturb you. I request all the organizers, CGVSS founders, to join the other link for the next hour to start. It's already started. Please. Thank you so much. Ram Ram. Shall we start, Australia? Yes, ma'am. Yeah. Om Namo Narayana. Namaskaram, one and all present here. A small thought from Srimad Bhagavatam. Happy Ekadasi to everyone. Let our lips keep chanting the namas throughout the day. Ears keep listening to the namas throughout the day. And our hearts always fixed on Bhagavan throughout the day. With this, let's begin. Sharadaji, start. Om Vishvasmai Namaha. Vishvam Vishnurvashatkaro Buddha Bhavya Bhavat Prabhu Bhutha Krit Bhutha Vritbhavo Bhutatma Bhuta Pavanaha Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagatihi Avyaya Purusha Sakshi Kshetra Yoktara Madam, starting irundhu solnulla madam. Madam, don't interrupt. Actually, Uma ma'am, already you have started in the day by global chanting. So please don't confuse us, ma'am. Please. Thank you. Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshwaraha Narasimhava Pushriman Keshava Purushottamaha Sarva Sharva Shivasthanur Buddha Dirnitiravyaya Sambhavo Bhavano Bharta Prabhava Prabhurishwaraha Swayambhu Shambhuradityah Pushkaraksho Mahasvanaha Anadinidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamaha Aprameyo Rishikesha Padmanabho Maraprabhu Vishwakarma Manustvashtha Stavishtastaviro Dhruvaha Agrahya Shashvata Krishno Lohitakshah Pradadanaha Prabhudastrika Gubdhama Pavitram Mangalam Param Ishanah Pranadav Prano Jeshta Shrestha Prajapatihi Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha Ishvaro Vikrami Danvi Medavi Vikramakramah Anuttamo Duradarsho Krutagnya Kruturatpavan Suresha Sharanam Sharma Vishvareta Praja Bhavaha Ahas Samvatsaro Vyalav Tatyayas Sarvadarshanaha
अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपीरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरो बभ्रुर्विश्वयोनिशुचिः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष स्वराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोग सहिष्णुर्जराद्विजः अनघो विजयो जेत विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः क्रामशर् अमोघशुचिरुचितः अतीन्द्रसंग्रहः स्कर्गो धतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यस्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहा सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विसृतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमोद्दामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमोद्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलोद्धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृत साधुर्जन्हुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपश्चिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुशशबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगदस्येदु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नादः पवनः पावनो नलः कामः कामहृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत् युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजिदनन्दजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नगुषो वृषः क्रोधः क्रोधहृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणतो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर् आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तारः सूरः सौरिजनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पत्नी पद्मनिपेक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्राक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महदीर्ऋतो वृत्तात्मा मगाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमस् समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्धामोदरः सहः महीधरो महाभागो
वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विगर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानस् संस्थानस्तानदो ध्रुवः परधिः परमस्पष्टः दुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्तविष्टोर्भूर्धर्मयोपो भगामगः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री समगच्छामः समीहनः यज्ञ इन्द्यो मगेजश्च करदुसत्रं सदाङ्कदिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृदः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुगदः सुकृते मनोहरोचितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्ववनस्ववसो व्याभिनैगात्मनैगकर्म कृते वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्धर्मकृद्धर्मी सदसदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशारः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्ग कृतान्तकृत महावराहो गोविन्द सुषेण कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदस्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वकन्द परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं विशक संन्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिपरायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संशेक्ता क्षेमकृच्चिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीनिभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयस श्रीमाल्लोकत्रयाशयः स्वक्ष संगोशतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्न सर्वचक्षुरणीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो मितविक्रमः
कालनेमिनिः वीरशूरशौरिशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामनः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एकोनैकः स वः कः किं यत्तत्पदननुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः स्वर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरगाविषमशून्यो कृताशीरसलच्चलक अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामीति लोकदृक् सुमेधा मेधजोधन्यस् सत्यमेधाधराधरग तेजो वृषो त्रितरस् सर्वशत्रप्रताम्बरग प्रग्रगो निग्रगो व्यग्रो नैकशृङ्गो कदाक्रजग चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्च चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावस् चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजशनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृदासो मृगधभुः सर्वज्ञो सर्वतोमुखः सुलभः सुहृदः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यक्रदो तुम्बरो सत्त्वः सानुरान्ध्रनिषूदनः सहस्राचिः सप्तजिह्वयः सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो सिन्ध्यो भयघृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृतस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वत्रुतः स्वास्यस्प्राक्वं सोवं सवर्तनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः श्रामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्यवान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हो हर्ष प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगिच्छ ज्योतिः सुरुचिर्भुभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः
अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्चितशासनः शब्दातिगः शब्दसहस्रशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पनः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञात् कृत् यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं चातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दन श्रेष्ठा शुटिशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गतन्वा गदाधरः रताङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ओं नमः इति वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्री वासुदेवोऽभिरक्षतु ओं नमः इति विश्वस्मै नमः. Once again, Ma. When you start a new Avarti, I think it's an Australia team or Australia just finished, sir. yeah. That's what my request would be. When when you have finished, other person they can tell the group or country whatever it is, just for others. Okay. L124, sir. L124. Right, whatever. We'll make it a standard practice. I don't know who is in charge of this link. Whoever is. Good morning, sir. Yeah. They can tell it. I am charging from 6 a.m. to 8 a.m. Fine. No, when they start a new Avarti, they can tell which batch number, which country, so that for others it will be known. Thank you, Shashima. We are asking you to post it in the chat box, sir. No, that's okay. But still, when you are done, because it is going on the YouTube everywhere, so they can also, who is going to chant the L series or VV or whatever country or anything, it will be useful, okay? For Okay, all sir. the, it is a small suggestion. Both should be okay. Thank you. Go ahead. Namaskaram, sir. Namaskaram. Thank you. विश्वस्मै नमः. विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवप्रभुः भूतकृत् भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थानुभूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो मरप्रभुः
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिगुद्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी दन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शक कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेदा प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कबीरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संविदः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर् विश्वयोनिः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः सदुरात्मा चतुर्व्यूहः सदुर्भुजः प्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिदजः अनेको विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशु रमोघस्य चिरोर्जितः अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुश्रीमा नमेयात्मा महादृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीषिर्गमनो हंसः सुवर्णो भुजहोत्तमः हिरण्यनाभः सुदभा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहः सन्दादा सन्धिमां शिरः अजो दुर्मर्शनस्तास्ता विष्णुरात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषशक्ति वाचस्पतिरुतारधीः अक्रनिर्क्रामणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्ता विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संभ्रमर्दनः अगत्संवत्सगो वह्नि रनिलोदरनीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टस्थिष्टकृत्सजिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहो वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषाधरः वर्तनो वर्तमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वग्नि महेन्द्रो वसुतो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपस्सिविपिष्टः प्रशाकरः ओजस्तेजो युतितरः प्रस्कतामा प्रतापनः ऋतस्पक्षातरो मन्त्रश्चन्द्रमाहुर्प्रदायुतिः अमृतांशुद्भवो भानुशशबिन्दु सुरेश्वरः औषधं जगदस्तेतुः सत्यकर्म पराक्रमः पूतभव्यभवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त कामः कामप्रदः प्रभुः युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः
अदृक्षो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्दजिद् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डीनकुशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रदिदः प्राणदो वासवानुजः अभानिधिरधिष्ठान अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुर् आदिदेवः पुरन्दरः। अतुलः सुरभो भीष्मः समज्ञो हविहरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विष्करो रोहितो माघो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाबाहो वेगवानितासनः उद्भवः क्षोभनो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परद्धि परम स्पष्टस्तुष्टः पुष्टशुभे क्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवपृतुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमगच्छाम समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकोशः सुगतः सुहृद् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदक्षरमदक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः कपस्तनेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्तो ज्ञानगम्यः पुराधनग शरीरभूतभृद्भोक्ता गवीन्द्रो भूरि दक्षिणग सोमपोमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमग विनयोजय सत्यसन्धो दासार्घ सत्वतां पदिः जीवो विनयिदा साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्दात्मा मगोदतिशयोऽन्तकः अजो मगार्ग स्वाभाव्यो जिदामित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढसङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामघः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्
संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीस श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनक श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वच्छ स्वङ्गः सदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वदा चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोगनाशनः अर्चिष्मानर्चिदः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रत्युम्नो मिदविक्रमः कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामबालः कामी कान्तकृदागमः अनिर्देश्यवभुर्विष्णु वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मा ब्रह्म विवर्तनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महारगः महाक्रदुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः स्तव्य स्तवप्रिय स्तोत्रं स्तुति स्तोतारण प्रियः पूर्ण पूरयिता पुण्य पुण्य कीर्तिर्नामयः मनोजवस्तितकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुमना हविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सत्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो कृताशीरशलच्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकास्वामी त्रिलोकधृक् सुधा सुमा मेधा मेधाजो धन्य सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषो धृतिधर सर्वसहस्रप्रदाम्बरः प्रक्रहो निग्रहो व्यक्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः सदुर्मूर्ति सदुर्बाहुः सदुर्व्यूहः सदुर्गतिः सदुरात्मा सदुर्भावः सदुर्वेदविदेहभात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयोतुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो तुरावासो तुरारिहा सुभाङ्गो लोहसारङ्गः सुदन्दुस्तन्दुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दो रत्ननाभ सुलोचनः अर्को वाजशनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारुदो महाघर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दर कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुहृदः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो तुम्बरो श्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूधनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैता सप्तवाहनः अमूर्तिरणगोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणबृन्निर्गुणो महान् अत्रुदस्वत्रुदस्वास्य प्राक्वंशो वंशवर्धनः पारभृत्कथितो योगी योगिशः सर्वकामदः आश्रमक्षमणक्षामः शुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिदादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः
अभिप्राय प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुत विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुत भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति द स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम यूजितशासनः सप्ताधिकः सप्तसहस्रशिशिरः सर्वरीकरः अग्रूरः बेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिमां वरः विद्वत्तमो वीदभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्दो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो नन्दश्रीर्जितमन्युर्भयावहः चतुरश्लोकभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूद्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहास प्रजागरः ऊर्ध्वः सत्पदाचार प्राणद प्रणवप्रणः प्रपणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणप्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेगात्मा जन्म मृत्युजरादिगाः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नादयेव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्रीशार्ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदीशार्गी शङ्की चक्री चनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्गी शङ्की चक्री चनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्गी शङ्की चक्री चनन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति. Hi, this is A276 batch chanting. Om Vishwasmai Namaha Harihi Om Vishwam Vishnurvashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhuhu Bhuta Krit Bhuta Bridbhavo Bhutatma Bhuta Bhavanaha Bhutatma Paramatma cha Muktanam Paramagatihi Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajñokshara eva cha Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshwaraha Narasimha Pushriman Keshava Purushottamaha सर्वशर्वस्तिवस्थानो भूतादिरिनिधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभुवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभोमरप्रभो विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्टस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वितः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्तनः प्रभूतः त्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं पराम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्मा विश्वरेतः प्रजाभवः अहत् संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सर्वादिरद्भुतः वृषा कपिरमेयात्मा
सर्वयोगविनिःस्पृतः वसुर्मसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघस्पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरभ्रभ्रुर्विश्वयोनिस्पृशिस्रवः अमृतशाश्वतस्ताणुर्वराहोरोहो महात्मा सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वसेनो जनार्दनः वेदो वेदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकादक्षः सुरादक्षो धर्मादक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरुज्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषश्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रनिर्ब्राह्मणि श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छितिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिसः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपश्शिपि विष्णुर्प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः सुरेश्वरः औषधं गजतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नादः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्त कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रदितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठाना अप्रमत्तः प्रतिष्ठतः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः
अशोकस्तारणस्तारश्चोरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मविभेक्षणः पद्मनाभो रवीन्द्रक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महार्दिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वृक्षारोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः चोबणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्दिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं शताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविघ्नाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपः सोमः पुरजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासर्वः सात्वतां पतिः जीवो विनीता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महर्षस्वभाव्यो जितमित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस् सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दस् सुशेषणः कनकां जगदि गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो जितः कृष्णो दृढसङ्कर्षणो अच्युतः
वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्प्रक्सर्वदृक्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासस् श्रीपति श्रीमतां वरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयस् श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानच्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धोपति प्रतिरतः प्रद्युम्नोरिमितमिक्रमः कालनेमिः वीरशौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव्यप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतरणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरणामयः मनोजवास्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्पारायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पहो दर्पदो दृप्ता दुर्धरोधापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः एको नैकस्कः किं यत्तत्पदमनत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनां गदिः वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमाने मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजोधन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो धृतिधरः सर्वशास्त्रभृतां वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्बाहुश्चतुर्भुजः
चतुर्वेदविधेकपात् समावर्तो निवृतात्मा दुर्जयो धुरात्रिकमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो धुरारिहः शुभांगो लोकसारंगस् सुतंतु स्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजशनः शृंगी जयन्तः सर्वविद्ययी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुप्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो शाश्वतः चारुरान्द्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः समुदः सप्तवाहनः अमूर्तिरनगो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अद्रुतस्वद्रुतः स्वास्यः प्राङ्गवंशो वंशवर्धनः भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुक् भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिलव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रकुण्डली चक्री विक्रम చదవండి వాళ్ళు వేరే గ్రూప్ వాళ్ళు ఓకే स्वस्ति स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणावरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनाधिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्माधिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः सप्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्राणवप्पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदीशार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षत् ॐ नम इति. Namaskaram all. Now next two avartis will be chanted by Malaysia team. Please be ready. ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो क्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधाना पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शिवस्तानुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विदाता दातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहत् संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजुष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगतादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः
वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् न मे यात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षिणः शास्त्रविसृतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणीर्श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसाद सन्नात्मा विश्वदृग्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टकृच्युचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपरा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेशुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूपशिपिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्रषष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशोद्भावो भानुशशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगदसेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यपवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नायकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रदित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठान अप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहत् भानुः रादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मे पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महार्धिर्रुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमश् समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसहः महीधरो महाभागो वेगवानमिदाशनः उद्भवः क्षोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परदिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोनयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरदुक्षजः रुदुः सुदर्शन कालः परमेष्टि परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः
विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदा षट्सरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः कबस्टिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेषु देवभृत् कुरुः उत्थरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृग्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभूमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयोजय सत्यसन्धो दासारः सत्त्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिसयोऽन्तकः अजो महार्हस्वाभाव्यो जिदामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस् सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रितसाध्यक्षो महाशृङ्गः कृताङ्गदकृत् महावराहो गोविन्दस् सुषेणः खड्गगदिः गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधरः वेदास्वाङ्गो जितकृष्णो दृढसङ्कर्षणोऽच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् बह आनन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्कदिशत्तमः सुदान्वाखण्डपरशोर् दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामङ्गः सामा निर्वाणं भेषजं विशक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिरस्रष्टा कुमुदा कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गुप्ता वृषाभक्षो वृषाप्रियः अनिर्वर्ति निर्वृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवाक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधः श्रीश श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीपिवावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकात्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गस्यतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरणीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णुर्वीरो नन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजो महारगः
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्ययस्तव प्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोत्रारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रधो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासस्तु यामुनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासो निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो तापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिर्शताननः एको नैकः सवाक्खिं यतत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीर्चलश्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषो दुदिधर सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकशारङ्गस्तुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाचशनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णाबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदा कुन्दरा कुन्दः पर्जन्यभावनो निलः अमृताशो मृतुवपुः सर्वज्ञो सर्वतोमुखः सुलभः सुवृतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुत्थापनः न्यग्रदो दुम्बरो स्वष्टः छानुरान्द्रनिषुद्धनः सहस्रचि सप्तजीवस् सप्तैद सप्तवाहनः अमूर्तिरणघोचिन्त्यो भयकृत् भयनाशनः अनुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वाधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रमश्रणमकक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्तो नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्कोर्कः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुक् विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुक् भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः आरौध्यकुण्डली चक्री विक्रमयूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसहस्तिशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः शमिनाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्चेज्जितमन्युर्भयापहः
चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो ऋषिदाङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो दादा पुष्प आस प्रजागरः उद्वगः सत्पदाचार प्राणद प्रणवपनः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेगात्मा जन्म मृत्युजरादिगः भूर्भुवः सत्तरुस्तारस् सविदा प्रपितामहः यज्ञो यज्ञवदिर्हज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञगृत् यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञादगृत् यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नानयेव च आमयो स्वयं देवकी नन्दनश्रेष्ठ सिद्धीसः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दगी चक्री शारङ्ग धन्वा गदाधरः रदाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्री सर्वप्रहरणायुध ओम नमेति वनमाली गदीशांगी शंगी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर वासुदेव बिरक्षतु वनमाली गदीशांगी शंगी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर वासुदेव बिरक्षतु वनमाली गदीशांगी शंगी चक्री चनंदकी श्रीमान नारायणो विष्णुर वासुदेव बिरक्षतु श्री वासुदेव बिरक्षतु ओम नमेति सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृत् भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्तानुर्भूताधिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्रष्टा सविष्टस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतघ्नो कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेतः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालप्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कबीरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संहितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरो बभ्रुः विश्वयोनिः सुशिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकात्यक्षः सुरात्यक्षो धर्मात्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंश्रश्चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्गति जगदादिजः अनगो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः सुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः
वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादृदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः शताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामा सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषश्रग्रीवाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहत्संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः अशङ्केयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धिसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषभर्वा वृषोदरः भर्तनो वर्धमानश्च विविक्तश्रुतिशाकरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिबिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो युतितरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रुद्धः सप्ताक्षरो मन्द्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नादः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतिदः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्रिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीकर्पः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थाननध्रुवः परार्धि परमस्पष्टः
तुष्टपुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरदो मार्गो नीयो नयो नयः वीरशक्तिमादं सृष्टु धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राणद प्रणव पृथुः क्रण्यहर्व शत्रुघ्नो व्यब्दो वायुरदोक्षणः रुद सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उक्रश संवर्षो दार्शो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानु परमानं बीजमव्ययम् अर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विन्नस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षामसमीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षणः तपस्ति नेमि सत्त्वस्तः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभूद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतः सोम पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दासाः शाश्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महर्षस्वभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रितसाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गो जितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशो दारुणो द्रविणप्रदः विवस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगसामा निर्वाणं भेषशम्भिषेक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकुच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीपताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः सदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सङ्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वदचक्षुररीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूति विशोकः शोकनाशनः अचिष्मानच्चितः कुम्भो विशुदात्मा विशोधनः
अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रत्युम्मोहितविक्रमः कालनेनिमिहावीरशौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिवा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनिर्देशपो विष्णु वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मवित् ब्राह्मणो ब्रह्मि ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्म महातेजा महोरगः महाक्रदुर्महायज्व महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तित्तकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सत्कतिः सत्कृतिः सत्ता सद्बुद्धिः सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासस्तु यामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वसुनिलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोतः पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवक्कः किं यतत्पद्मनोत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदीः वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलच्चलः अमानिमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधमेधजो धन्यः सत्यमेध्याधराधरः तेजो वृषस्तुतितरस् सर्वषष्ठावतारः प्रग्रो निग्रो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश् चतुर्बाहुश् चतुर्व्यूहश् चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश् चतुर्वेद विदेकपात् सामवर्तो निवरात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकशारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उत्पहवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभस् सुलोचनः अर्को वाजशन शृंगी जयन्तः सर्वविजयः स्वर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाकृतो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्दपर्जन्य पावनो निलः अमृदाशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभ सुवृद सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यक्रोधो तुम्परोश्वत्थचाणूरान्ध्र निषूदनः सहस्राचिः सप्तजिह्वः सप्तैता सप्तवाहनः अमूर्तिरनघो चिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुबृहत् कृशस्थूलो गुणनिर्गुणो महान् अधृतस्वतृदस्वास्य प्राग्भंसो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता धमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सात्वतवान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियप्रीतिवर्धनः विहाय जगति ज्योतिषुरचिर्हृतविभुः रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हृतभुग्भोक्ता सुखदो नैकचोग्रजः
अनिविण्ण सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातमः कपिलः कपिलव्ययः स्वस्ति कृत्स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः आरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमयोजितशासनः शब्दातिगः शब्दसहस्रशिरः सर्वरीकरः अक्रूरः पेसलो दक्षो दक्षिणक्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः शान्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्याधिशोदिशः लक्ष्मी सूर्यो सूर्यस्कन्दरः भीमो भीमकरात्मकः आधारनिलयो दाता पुष्पहास प्रजाकरः उद्भगः सत्कदाचार प्रणव जन्म मृत्युचरादिगः पूर्ववस्वस्थरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञप्रत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञाण्डकृत्यज्ञगुह्यम् अन्ननम्माद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानसामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा शुक्लेशः पापनाशनः शङ्खभृङ्नन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खी चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु श्रीवासुदेवोभिरक्षतु ॐ नम इति विश्वं विष्णुर्